अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माविश और आप देख रहे हैं माविश टीचर्स। फ्रेंड्स, आज मैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं उनके साथ डिफरेंट चैप्टर्स की सॉल्व लैब एक्टिविटीज और नोट्स को शेयर करने जा रही हूं। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको बताती चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल माविश टीचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नोट्स और लैब एक्टिविटीज से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड सॉल्व नोट्स चाहिए तो आपको राइट साइड टॉप के ऊपर एक बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की लैब एक्टिविटीज हैं ये। सो हियर वी गो। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक अभी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद नोट्स आपसे मिस ना हो जाएं। और अगर आप चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड सॉल्व नोट्स और लैब एक्टिविटीज हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से राइट साइड टॉप के ऊपर एक बटन देख लें और उस पर क्लिक कर लें ताकि चैप्टर 3 की सॉल्व नोट्स और लैब एक्टिविटीज आप हासिल कर सकें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर 6 से रिलेटेड solved lab activities or different solved questions.
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद नोट्स और लैब एक्टिविटीज़ के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।